व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज। और दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। एलबीएमए ने क्या कुछ वहां पर कहा है सोने चांदी की उठापटक को लेकर। रुथ क्रॉवेल जो कि एलबीएमए की सीईओ है, मैंने उनका खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। वो लंदन से मेरे साथ जुड़ी थी, तो वो इंटरव्यू आपको सुनवाऊंगा। ऑगमोंट की क्या कुछ राय उसके बारे में बताएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत को लेकर कोशिशें तेज हो गई, तो उसकी भी चर्चा हम लोग इस इंटरव्यू में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको भाव की जानकारी दे दूं। भाव में फिलहाल जो है वहां पर सोने और चांदी का अगर हम देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, वहां पर गिरावट देखी जा रही। $50 सोना 1% से ज्यादा गिर चुका है, $4700 के नीचे आ चुका है। चांदी की अगर मैं बात करूं तो चांदी में करीब करीब 0.25% की गिरावट आ चुकी है और चांदी $75 के नीचे पहुंच चुकी है। इस सोने चांदी की उठापटक पर एलबीएमए सीईओ की क्या कुछ राय है वो मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही ऑगमोंट की राय भी मैं आपको बताऊंगा, उनका क्या कुछ मानना है सोने चांदी के भाव पर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी दर्शक मेरे साथ जुड़ चुके होंगे उम्मीद है। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक शेयर कर सकते हैं। और हाइप का भी आजकल एक फीचर आ गया, उस हाइप के बटन को आप दबा देंगे तो वीडियो जो है और भी ज्यादा लोगों तक वहां पर पहुंच जाएगा। सोने चांदी की अगर आप खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा। और कल 11 बजे सुरेंद्र मेहता जी के साथ मेरा खास पॉडकास्ट आ रहा है। 1 घंटे का ये पॉडकास्ट है, इसमें सोने चांदी के भाव की वहां पर विस्तृत चर्चा की गई है। इनका क्या मानना है, क्या सोना 5 लाख पहुंचेगा, चांदी कहां तक पहुंच सकती है। कल इंटरव्यू जरूर देखिएगा। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की वार्ता रुकने से वहां पर सोने चांदी के भाव में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से वहां पर कोशिशें की जा रही है कि दोनों देश वापस से बातचीत करें। फिलहाल वहां पर कोई चीजें बातचीत ऐसी देखने को नहीं मिल रही। और इसका असर जो है, अगर मैं एमसीएक्स की बात करूं तो एमसीएक्स में सिल्वर में 3000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। 2,41,000 के आसपास वापस सिल्वर पहुंच चुकी है। गोल्ड की अगर मैं बात करूं, वहां पर गोल्ड में भी गिरावट देखी जा रही है। दोस्तों, गोल्ड के प्राइस में करीब करीब 1200 रुपए की गिरावट है और गोल्ड का प्राइस अभी 1,51,000 के ऊपर हालांकि अभी भी बना हुआ है। तो सोने और चांदी दोनों में वहां पर गिरावट जारी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और ईरान में बातचीत की कोशिशें नाकाम हो गई है। ऑगमोंट की क्या कुछ मानना है सोने को लेकर, चांदी को लेकर, इनकी राय भी मैं बता देता हूं। ओवरऑल इनका सेंटिमेंट मानना है कि बुलियन का कॉशियस रहेगा। डॉलर में मजबूती और ट्रेजरी यील्ड, इन पर आपको ध्यान देना है। साथ ही 29 अप्रैल को वहां पर फेडरल रिजर्व का रात में 11:30 बजे डिसीजन आएगा। 30 अप्रैल को अमेरिका में Q1 का जीडीपी का डेटा आएगा। यूएस और ईरान की डिप्लोमेसी, ये सारे चीजें इस हफ्ते भाव को प्रभावित कर सकती हैं। ऑगमोंट का मानना है कि गोल्ड को ऊपर में 4850 यानी भारतीय बाजार को देखें तो 1,55,000 पर रेसिस्टेंस मिल रहा है। रेसिस्टेंस का अर्थ इससे ऊपर फिलहाल भाव नहीं जा रहा है, यहां पर जाकर भाव अटक जाता है। ऊपर के लिए कोई ट्रिगर नहीं मिलता, भाव वापस नीचे की तरफ दौड़ पड़ता है। अगर इस लेवल के ऊपर भाव गया, 4850 के ऊपर भाव निकला, इसको ब्रेकआउट मिला, तो $5,000 तक भी सोना पहुंच सकता है और ऊपर में 1,60,000। नीचे में सपोर्ट जो है 4650 का, हालांकि अभी $4700 का लेवल गोल्ड वहां पर तोड़ चुका है। तो 4650, 1,51,000 वहां पर नीचे में सपोर्ट है। चांदी को जो रेंज है $2,35,000 से 2,58,000 यानी 73 से $82 के बीच में चांदी वहां पर झूल रही है। किसी भी साइड में ब्रेकआउट होता है, अगर $73 के नीचे चांदी जाती है तो गिरावट, और $82 के ऊपर अगर चांदी निकल जाती है तो तेजी। किसी भी साइड में ब्रेकआउट हुआ तो वो उस साइड को पकड़ लेगा। अब मैं आपको रुथ क्रोवेल, एलबीएमए की सीईओ है, उनके इंटरव्यू की हिंदी में बिग हाइलाइट्स बता देता हूं। क्योंकि ये इंटरव्यू मैंने इंग्लिश में किया है तो आपको एक बार हिंदी में, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी को मैं एक बार हिंदी में समझा दूं ताकि आप में से जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो इस इंटरव्यू को समझ सकें। और दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब कहीं पर भी देख रहे हैं। एलबीएमए की सीईओ रुथ का मानना है कि वहां पर जो सोने और चांदी के उतार चढ़ाव हो रहा है, इसके पीछे 2 कारण है। पहला, युद्ध छिड़ने के साथ सोने को अपना काम करना था। जब युद्ध शुरू हुआ तो वहां सोने की कीमत में उतार चढ़ाव देखा गया, क्योंकि निवेशकों ने बाजार को देखते हुए वहां पर लिक्विडिटी के लिए सोने का यूज किया दोस्तों। और इस वजह से लिक्विडिटी की भरपाई जो है वहां पर करने के लिए उन्होंने बिकवाली की। वर्ष की शुरुआत में 2 बातें शामिल थी, ऐसा रुथ का मानना है। वहां पर रुथ क्रोवेल का, इनका मानना है कि इस उद्योग और एसेट क्लास में इतनी अधिक
रुचि रही कि बाजार में झागदार हो गया बाजार, मतलब बहुत सारे लोग वहां पर आ गए। Q1 यानी पहली तिमाही में इनका ये मानना है कि ये झाग हट चुके हैं। जिन लोगों ने सट्टेबाजी के तौर पे पैसा बनाने के लिए घुसे थे वो सब अब बाहर निकल चुके हैं, और अब जो है इनका ये मानना है कि काफी जो भी कुछ हुआ हेल्थी रहा और बाजार ने अतिरिक्त झाग को हटा दिया। अब जो भी बचे हैं वो टिकाऊ लोग वहां पर बचे हुए हैं, जो सट्टेबाजी के लिए आए थे वो निकल गए। और इनका यह मानना है कि सोना आपके पोर्टफोलियो में एक लंबी अवधि के लिए रहना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए वहां पर होना चाहिए। और सोना जो है इनका यह मानना है कि जियोपॉलिटिकल घटनाओं को अगर हम देखते हैं तो इसमें काउंटर साइक्लिक होता है, शुरू में गिरावट आती है क्योंकि ये लिक्विड होता है, और बाद में ये जो है वहां पर धीरे धीरे बढ़त की तरफ बढ़ता है। तो शुरुआत में गिरावट देखी जाती है, वैसा ही यहाँ पर देखा गया, इसीलिए सेफ हेवन की बात है तो वो निश्चित रूप से जारी है, इनका ऐसा मानना है। गोल्ड चांदी को लेकर इनका मानना है कि चांदी वहां पर और सोना ये दो अलग अलग एसेट क्लास है, चांदी एक अलग अलग एसेट क्लास है, दोनों में व्यापार करते हैं, लेकिन चांदी का संबंध सोने की तुलना में पीजीएम ग्रुप मेटल्स और अन्य मेटल बेस मेटल से कहीं अधिक है। उनका यह मानना है कि औद्योगिक यूज और क्लासिक आपूर्ति और मांग की चुनौतियां ये भी चांदी के ऊपर असर डालती है वहां पर। चांदी को हालांकि गरीब आदमी का सोना कहा जाता है, लेकिन तरलता के मामले में यह सोना की तुलना में बहुत थिन है, यही इनका मानना है। हालांकि इनका यह भी कहना है कि चांदी में भले कितनी भी बड़ी उठापटक हो जाए, लेकिन गोल्ड जो है वहां पर सेंट्रल बैंक खरीदते हैं। इनका यह मानना है कि गोल्ड सोने की निरंतर तेजी के लिए अभी भी वहां पर मजबूत सपोर्ट है, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि दुनिया में अभी भी बहुत सारी अनसर्टेनिटी वहां पर बाकी है, और सोना सेफ हेवन की जो भूमिका है उसको बहुत अच्छे से निभाता है। एक बात और इनका यह कहना है कि डेटा को भी वहां पर देखना चाहिए। सोने का उतार चढ़ाव अगर 30 साल की अमेरिकी ट्रेजरी के साथ अगर देखें तो उससे कहीं ना कहीं वो मिला जुला है, इसलिए वहां पर सट्टेबाजी के रूप में सोने को सोचना बंद करें, इसको एक पोर्टफोलियो में लंबे समय के हिसाब से देखें दोस्तों, ऐसा रुथ का मानना है वहां पर। रुथ क्रोवेल जो कि एलबीएम में सीईओ है। साथ ही इनका यह मानना है कि भारत में जो नए गुड डिलीवरी रिफाइनरों का ये स्वागत करेंगे। हालांकि इनका यह मानना है कि बुलियन बैंकों को एलबीएमए की जो गोल्ड प्राइस की ऑक्शन होती है उसमें भाग लेना चाहिए, और साथ ही इनका यह मानना है कि गोल्ड की जो है रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। चलिए मैं आपको एलबीएमए की सीईओ रुथ क्रोवेल का इंटरव्यू सुना देता हूं। बहुत बढ़िया इंटरव्यू मैंने इनके साथ किया, हालांकि मोटा मोटी मैंने आपको इस इंटरव्यू की बातें सुना दी है। नाउ यू कैन वॉच बिग एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑफ रुथ क्रोवेल सीईओ एलबीएमए। Hello friends, and you are watching Gold Silver News, and today we have a very special guest from LBMA CEO Ruth. Welcome Ruth to our show. Thank you so much. It's always a pleasure to be here. LBMA report described Q1 as an what are the key drivers behind this? Sure. I think there's two major drivers in terms of the volatility. One, and probably the most important, was gold doing its job with the outbreak of war. So most recently, when the outbreak of war in the Middle East, you saw some volatility in the gold price, as many investors, given the wide market disruption, were going to gold as a point of liquidity. Here is where you saw them selling the winners, being gold, to pay for the losers. And this was the same when you look at other US treasuries in terms of how they responded on the price point. The other aspect in terms of earlier in the year included two main things. One, there has been so much interest in the industry and in the asset class itself. The market had gotten a bit frothy because of this. And when it comes to investing in gold, you have to really widen your investment lens. You should be thinking about this as a diversification, a stability mechanism of a long-term portfolio, not as an opportunity. Remaining are those sticky structural investors who see the value of gold in the long term. And I think in this day and age, it's easy to be pushed around by the short-term urgent, given the
uncertainty in the world. But gold is there as a long-term, important, diverse part of your portfolio. There were concerns regarding gold as a safe haven asset we saw during war, gold is going down. And when war stopped, if we get some news about ceasefire, then gold start rallying. Well, ultimately, gold is countercyclical. So as you see these major geopolitical events, it is going to rise. Initially, there's a dip because it's playing that high quality liquid asset role. So you can get liquidity out to pay for other margin calls and other obligations within your portfolio, but then afterwards you're seeing this rise. So it really is that liquidity of gold that is being represented in those movements. So in terms of a safe haven, that certainly continues, and it's more about how you understand gold's anti-cyclical nature and the strength of that. And silver also showed very high volatility. Well, I mean, there are two very different asset classes. And so, as much as you have precious metals traders and they're trading both, silver has a lot more to do with the PGMs and other base metals than it does to do with gold. So, on the industrial use and the classic supply and demand challenges on there, you've certainly seen some of those aspects. I think it following in gold sort of on its coattails, there's a certain amount of that, silver being the poor man's gold, but it's a much thinner metal in terms of liquidity than gold. I think I was recently speaking and saying, if you're trying to compare the two, yes, both are shiny, but only one is held by central bankers. And we saw LBMA forecasting $6,000 to $7,000 for the gold and silver around, I think, $160 in the surveys. How do you see? Is this achievable, or are their price targets are realistic? I mean, obviously, these forecasts were given at the beginning of the year, and we have lived several years since then in only a matter of months. So what I would say is there is still strong support for gold's continued rally, partly because there's not much we can be certain of in this world, but probably ongoing uncertainty is one of them. And gold plays that safe haven value role very well. It is doing well when the rest of the world is not doing as well. One thing I would really encourage, because I think the point on volatility gets made a lot, but if you look at the data, gold's volatility is very similar to a 30-year US Treasury. So again, you need to widen that investment lens, stop thinking about it as a short-term making money off of the speculation, but as a long-term diverse part of a structured portfolio. And so to that end, in terms of these higher numbers, there certainly is a case because I think, unfortunately, we don't see the world going back to more stability anytime soon. And we saw logistic challenge during the tariff era, and now this new situation. How do you see this logistic of gold and silver? Is there a disruption in the market in the logistic thing? I would say last year we certainly had challenges. It's quite unprecedented in terms of a return to global tariffs and what that has done to supply chains around the world. Now, precious metals performed extremely well during that period. There's lots of other markets who did not do as well. And I think that disruption was challenging about this time last year. But I think if you again look at the data in terms of the holdings, we're actually up in terms of gold and silver holdings now. So I think look at the numbers, not at the emotion. Decide for yourself. And that's been part of our most recent data we've put out on hqla.org. Or hqla.gold, I believe. It's taking the data we've collected over the last 6 years, over the last few crises, and really made this case. So you don't need to simply go based on other people's opinion. Have a look at the data, the academic studies, and it makes a very clear case in terms of gold's ongoing appeal for the short to medium term. You said about HQLA, and you and World Gold Council both tied up to
make one website. I think you have made one separate website for HQLA. Can you tell us about that? Yes. So here, gold was not recognized as a high quality liquid asset when it should have been. And the reason we were given by regulators is we didn't have data. So we addressed that point. We then were told we didn't have data from a crisis. We now have from many crises, and this is where this analysis of gold's volatility relative to 30-year treasury comes from. In the shorter term, closer to a 10-year treasury, you can see the role that gold or how it compares to other asset classes. It's actually less volatile than equities over the medium term as well. So HQLA takes that data, gives the analysis, and is saying to prudential regulators, it's not that you got it wrong, it's that you didn't have this information. So investigate, and we are confident they should come to the right conclusion. And when will we expect Indian good delivery as a LBMA accreditation? Well, I mean, we do have one. I would certainly welcome not only good delivery refiners in India, but I would also welcome bullion banks to join the global price auction for the LBMA gold price. And that is something that seems to be changing. But the seat at the table is there. We just need reputable firms to sign up. And what about the preparation of LBMS annual conference in Italy? How are you preparing for that? I mean, we're working on the speaker program now, but the interest has been overwhelming. I think we've actually already sold out the Sunday night rooms at the hotel, and we have the entire hotel. So the interest in not only gold is at all-time highs, but also Italy is always a very exciting place to go for an event. So I think the combination will make for a very successful conference. Anything else you want to say? We left, if anything. Is there anything you want? Yes, I would just say in terms of higher prices that attracts all types of investors, including the most nefarious. So we have been delighted to see the call to action coming from the UK government to see industry and governments take action on illicit actors who are using gold to finance threat around the world. Gold has always been a liquid way to move money. As the price climbs, it becomes even more efficient. And given the many sanctions on gold, we are asking for countries that are major centers for bullion to look about how they can be consistent on enforcement of OECD standards, as well as building real capacity and understanding for artisanal miners and how we break that link between artisanal mining and the illicit finance. So we are doing that not only in terms of a call to action with our Bullion Center recommendations, but we also are delighted that our Gold Bar Integrity platform not only has all refiners on it, but also that foundation of infrastructure is laid so that in a world where gold laundering has never been higher, or the risk of gold laundering has never been higher, you have real technology that can assist you in ensuring that the gold that we all treasure has been ethically sourced. Thank you so much, Ruth, for your time, and it was very nice talking to you. Thank you so much. It's a pleasure, Bipindra. So दोस्तों, ये रूथ क्रोवेल थी, इनका इंटरव्यू मैंने किया। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, इसको मैंने पूरा हिंदी में समझाया है। आप लोग थोड़ा सा प्रीवियस में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, 28 अप्रैल सुबह 11 बजे कल 1 घंटे का लाइव होगा दोस्तों पॉडकास्ट में, हमारा जो है सीए सुरेंद्र मेहता जी के साथ। तो देखना मत भूलिएगा। अगर आप ज्वेलर हैं, बुलियन का काम करते हैं, या ट्रेडर हैं, या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे डिस्कशन किए हैं। मैंने इसका लिंक डाल दिया, डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया है। लिंक में सारी चीजें डाल दी, किन किन चीजों पर हमने वहां पर डिस्कशन किया है मेहता जी के साथ। और 1, 2, 3 मई को वहां पर दोस्तों एसएस कन्वेंशन सेंटर हैदराबाद इंटरनेशनल ज्वेलरी शो हो रहा है दोस्तों। और ये जो है आप लोग भी यहाँ पर जा सकते हैं। और दोस्तों, ये जो इंटरव्यूज मैं लेके आता हूँ इंग्लिश में इसलिए क्योंकि ग्लोबल व्यूज, इंडियन जो लोग हैं या इंडिया में कई बार जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उनको ग्लोबल व्यू पता चलने में थोड़ी दिक्कतें होती है, इसलिए मैं डायरेक्ट
चाहे LBMA हो, चाहे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO हो, चाहे मेटल्स फोकस लंदन के MD हो। मैं इन सबको आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। क्या कुछ ग्लोबल लेवल पर चल रहा है वहां पर, वो सब बताना जरूरी है, समझना जरूरी है, समझाना जरूरी है, उनकी क्या थिंकिंग है। क्योंकि आप तक न्यूज छन कर आती है, 5 फिल्टर के बाद आप तक न्यूज आती है, और मैं कोशिश करता हूँ डायरेक्ट LBMA क्या कह रहा है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्या कह रहा है, मेटल फोकस क्या कह रहा है, बड़े बड़े जो एनालिस्ट है वो क्या कह रहे हैं, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारी चीजें इंग्लिश में होती है, क्योंकि वर्ल्ड जो है गोल्ड का वर्ल्ड बहुत ज्यादा इंग्लिश इम्पैक्टेड है, इसलिए वहां पर दोस्तों ये इंटरव्यूज इंग्लिश में करने पड़ते हैं मुझे, पर मैं हिंदी में भी आपको उनको समझाता हूँ। मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।